Jai Hind everyone. So today we are studying digital communication with code BEC 601 and we are going to cover a very important topic of unit number 5 which is called Huffman coding. So when we talk about Huffman coding, first of all it is important to understand what is source encoding and why it is important. What is the actual need of source computing? Source encoding. So source encoding is done to improve the efficiency of a communication system. Source encoding to improve the efficiency of communication. The basic purpose is security, to ensure the security of your data. Suppose we have a message of length M1, M2 up to Mn, and if we map this message onto a code which is here represented by C1, C2 up to Cn, such that the transmission is 1-to-1 for each new message. Now, what we are doing is we are converting our original message into a coded message so that it cannot be accessed by any third party which is not intended to use it. Okay, so basically what we are doing, we are increasing the efficiency of our data and we are increasing the security aspects of our data by using source encoding. Therefore, for each message, there is only one encoded message. Now, there is a particular message which is encoded, which has been already transmitted from the transmitter to receiver. This is the transmitter, this is the receiver side. So, before transmitting the message, what we are doing is, we are adding another part which we called encoder, and this process is called encoding or source encoding by using different coding schemes. Alright, now this encoded message is transmitted through the channel where noise is added to it, channel, here noise is added to your signal, and at the receiver, we must be having a decoder which can decode your message to recover the original message that was transmitted. So at the receiver end, what is required? At the receiver end, the mechanism decoding is required. So the basic purpose of source encoding is to ensure the safety, security of your data, privacy aspects of your data. Now, we will move forward to Huffman coding, which is actually one of the very important types of coding, and you can see that in previous year papers, we generally have question from Huffman coding for sure. In maximum marks, Huffman coding is asked. Okay, so let us have understand what is the procedure of Huffman coding step by step by using an example. Now, in this example which I have taken, we have 6 messages. Okay, now these messages are M1, M2, M3, M4, M5 and M6. Let these messages be M1, M2 up to M6, and these messages are having probabilities 0.30, 0.25, 0.15, 0.12, 0.10 and 0.08. Now, they are saying that apply Huffman coding and find the average code length. Average code length निकालनी है आपको. You have to find out the entropy, code efficiency and redundancy, assuming m is equal to 2. M is the number of symbols. Okay, so first of all you have to apply Huffman coding to this data. After applying Huffman coding, you have to find out all these parameters. So very quickly, first of all, I'll tell you what is the formula to find out all these parameters. First is average code length. So average code length represented by L bar is equal to the summation of I tending from 1 to n. It is equal to the summation of number of bits required to encode a particular message multiplied by its probability. Okay, so it will be equal to, let us suppose, mi into pi, where mi is the number of bits required to encode ith message, and pi is the probability of ith message. Okay, then there is a term called entropy. So entropy of x is equal to summation I tending from 1 to n. It is equal to probability of ith message multiplied by log base 2 1 upon pi. Okay, this is the formula for finding out the entropy. Then we have code efficiency. Code efficiency can be found out by dividing these two parameters which we have just evaluated. So this is equal to hx divided by L bar into log base 2 m.
Here m is given to you as 2, so you can just put log base 2m, that is log base 2, which is equal to 1. Okay, and then redundancy. Redundancy is equal to 1 up minus efficiency. Okay, so here we have the formula for finding out all these parameters which we have been generally asked in the question of Huffman coding. Now we'll learn how to apply this Huffman coding when a particular message is given to us. Now first step number 1 is to arrange messages in decreasing order of probability. To arrange the messages in decreasing order of probability. So the messages given to us are M1. First on one side we'll write the messages and on other side we'll write the probability. So messages are M1, probability highest is for M1 message, that is 0.03. Then for M2 the second highest probability is 0.025. Then for M3 we have the third highest probability, that is 0.15. For M4 we have the fourth highest probability, that is 0.12. And for M5 we have 0.10. And for M6 we have 0.08. So you can see that these probabilities are already given in a decreasing order. In case if the probabilities are not given in decreasing order, the first step of Huffman coding is to arrange these messages in the decreasing order of their probabilities. Okay, so this is the first step. Now what you have to do is, we can shift this into a next slide so that you can clearly understand the steps of Huffman coding. So here we have to write down one column for messages and one column for their probabilities, and I am repeating that again: M1, M2, M3, M4, M5 and M6. We have a total of 6 messages and we have arranged these messages in the decreasing order of their probabilities. So first was 0.3, then we have 0.25, then let me check from the previous one: 0.15, 0.12, 0.15, 0.12, 0.10 and 0.08. So these are the messages which I have arranged in the decreasing order of their probabilities. Now I will start applying the Huffman coding technique. So what the Huffman coding says, the next step is we have to combine the lowest two probabilities and find their sum. So what is the sum of 0.10 and 0.08? This comes out to be 0.18. On rough I can do this calculation here: 0.08. The sum comes out to be 0.18. Now, the new probability is 0.18, the combination of the last two ones. So, I have to find out how I will again arrange these probabilities in the decreasing order. So, this 0.18 will come here. In the decreasing order, it should come between 0.25 and 0.15. So, I will write down the probabilities again as 0.3, 0.25. Now, 0.18 will come from here, 0.18 will come and 0.15 will be down and 0.12. So what I have done in the next step is, please you can again check it. I have combined, added the lowest two probabilities. The result is 0.18 and now again I have arranged the probabilities in the decreasing order. Okay. Now you have to repeat this process unless we are left with only two probabilities. Okay. So we'll again combine the lowest two probabilities. The value comes out to be 0.15 plus 0.12, that is equal to 0.27. 0.27 must lie somewhere between 0.3 and 0.25. Okay. So I'll again write the probabilities as 0.3, 0.27, which is the sum of these two probabilities, and the remaining are 0.25 and 0.18. So again what I have done is, I have added the lowest two probability values and again I have arranged all the probabilities in the decreasing order. Since I am left with 4 probabilities, I again have to repeat this step. So I'll combine these two now. The result will be 0.25 plus 0.18. This is 3 and this is 4. This is 0.43. Okay. So 0.43 must lie at the topmost part. So this is 0.43. 0.3 must lie below it and 0.27 must lie here.
Now one more step will be required so that my number of probabilities can be reduced to 2. So I'll combine the lowest two ones and the result will be 0.3 and 0.27. That gives me 0.57, which is the highest one. So 0.57 will lie here and 0.43 will become here. So now the iteration part is complete. I am left with only two probabilities. Here I will stop my step number 2. अभी जो मेरा दूसरा स्टेप था मैं इसको यहीं रोक दूंगी and now I'll start giving codes to it. Okay, how? What is the manner to provide codes to it? We'll start with the last one, the last column. In the last column we have only two probabilities. Let us treat them as two symbols, two different symbols. So I need to transmit these two different symbols using different code words. Okay, so when we talk about binary, in binary we have only two variations. We either have 0 या फिर 1. हमारे पास या तो 0 होता है या फिर 1 होता है कोड. तो इन दोनों सिंबल्स को अगर मुझे अलग अलग करना है तो इन्हें अलग अलग कोड देना पड़ेगा. मतलब मैं एक को 0 दे दूं और एक को 1 दे दूं. तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले को आई हैव गिवन 0 और नीचे वाले को आई हैव गिवन 1. Okay, just to differentiate them. Now I'll backtrack this. How? What is the technique to backtrack this? 0.43 is written here. 0.43 has 1. So I'll transfer this 1 here. Okay. Now 0.57 कहां से आया? ये 0.57 कहां से आया? इन दोनों के सम से आया. 0.3 और 0.27 के सम से आया. So this 0.57 has 0, which has come from these two 0.3 and 0.27. So this 0 will be transferred to 0.3 as well as to 0.27. Now this 0 has been transferred to both of them, 0.3 and 0.27. अब इस वाले कॉलम को जरा चेक करिए. इस वाले कॉलम में 0.43 के पास 1 है और 0.3 और 0.27 के पास 0 0 है. दोनों के पास 0 0 है. 3 सिंबल हैं, 3 में से एक अलग है और 2 के पास सेम है. नहीं चलेगा. फिर से जिन 2 के पास सेम है हमें उन्हें फिर से अलग अलग करना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा ही कोडिंग का रूल होता है कि कोई भी 2 सिंबल सेम पर्टिकुलर कोड वर्ड से रिप्रेजेंट नहीं होने चाहिए. हर एक सिंबल का अलग कोड वर्ड होना चाहिए. ठीक है ना. तो अब इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हम फिर से वही रूल फॉलो करेंगे. ऊपर वाले को दे देंगे 0 और नीचे वाले को दे देंगे 1. तो ये मेरे अब तीनों कोड वर्ड्स अलग अलग हो गए 3 सिंबल के लिए. 0.43 के लिए 1, 0.3 के लिए 0 0 और 0.27 के लिए 0 1. ओके, फिर से पीछे की तरफ चलेंगे. 0.3 के पास क्या है? 0.3 के पास है 0 0. 0.27 के पास क्या है? 0.27 के पास है 0 1. नाउ 0.43 इन दोनों के सम से मिलके बना है और 0.43 के पास है 1. तो ये जो 1 इसके पास है ये इसके पास भी ट्रांसफर हो जाएगा और इसके पास भी ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, नाउ विल चेक दिस कॉलम. In this column we have 0.3 with 0 0, 0.27 with 0 1. दोनों अलग अलग हैं, लेकिन 0.25 और 0.18 फिर से सेम लेवल पे आ गए. इन दोनों के पास 1 1 है. इन दोनों को फिर से अलग करना है. इन दोनों को अलग करने के लिए फिर से हम क्या करें, ऊपर वाले को असाइन कर दें एक 0 और नीचे वाले को असाइन कर दें एक 1. तो ये हो गए मेरे अलग अलग. फिर से बैक ट्रैक कर लेते हैं. तो आइए, 0.3 के पास क्या है? 0.3 के पास है 0 0. 0.25 के पास है यहां से 1 0. ओके, 0.18 के पास है 1 1. 0.15 और 0.12 का सम है 0.27. तो 0.27 की जो वैल्यू है 0 1, दैट विल बी असाइन टू 0.15 एज वेल एज टू 0.12. तो ये जो 0 1 इसके पास है ये यहां भी आ जाएगा और ये 0 1 यहां भी आ जाएगा. ठीक है, फिर से वही समस्या आ गई. 0.15 और 0.12 के पास सेम कोड आ गया 0 1 0 1. ठीक है ना. इन दोनों को अलग करेंगे, ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1 देके. तो ये आ गया हमारा कोड. अब इसे फिर से बैक ट्रैक कर लो. दिस इज 0 1 0. इसको फिर से बैक ट्रैक कर लेते हैं. तो अब 0.3 के पास आ गया फाइनल कोड 0 0. 0.25 के पास आ गया 1 0. 0.15 के पास आ गया 0 1 0. 0.12 के पास आ गया 0 1 1. ओके, अब 0.18 जो है वो इन दोनों के सम से बना है 0.10 और 18. तो इन दोनों के पास क्या क्या है? इसके पास 1 1 है, तो ये 1 1 इन दोनों को मिल जाएगा. इसको भी 1 1 मिल जाएगा और इसको भी 1 1 मिल जाएगा. ऑलराइट, दोनों सिंबल सेम हो गए. इन दोनों को सेपरेट करेंगे बाय व्हाट टेक्निक? ऊपर वाले को 0 दे दीजिए, नीचे वाले को 1 दे दीजिए.
ठीक है, तो ये हो गया आपका आखिरी स्टेप। आखिरी स्टेप तक आते आते आप देखोगे कि आपके जितने भी मैसेजेस थे, 6 मैसेजेस थे हमारे पास M1 से लेके M6 तक, और M1 से लेके M6 तक हर मैसेज के लिए हमें एक अलग कोड मिल चुका है। यू कैन चेक फ्रॉम दिस कॉलम कि किसी भी 2 मैसेजेस का कोड सेम नहीं है, हर एक मैसेजेस को एक यूनिक कोड वर्ड असाइन हो गया थ्रू दिस कोडिंग टेक्निक विच इज कॉल्ड हफमैन कोडिंग। ओके, हफमैन कोडिंग इज ऑल्सो एक्चुअली कॉल्ड कॉम्पैक्ट कोड, आप इसको कॉम्पैक्ट कोड भी कहते हैं कई बार, ठीक है। इसकी खास बात या हम कह सकते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये है कि यहाँ पे किसी भी 2 कोड वर्ड्स, 2 मैसेजेस को सेम कोड वर्ड नहीं मिला। दूसरी बात, देयर इज ओनली वन वे इन विच यू कैन असाइन कोड्स टू अ पर्टिकुलर मैसेज, एम्बिग्विटी इज नॉट देयर एज कंपेयर टू शैनन फानो। शैनन फानो कोडिंग का जो डिसएडवांटेज होता था, दैट इज देयर कैन बी मोर देन वन वेज इन विच यू कैन असाइन कोड्स टू द डिफरेंट मैसेजेस, that ambiguity has been resolved by your Huffman coding. So this is the advantage of Huffman coding over Shannon Fano. अगर कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आए तो आप उसको उस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। Okay, so now we have completed with the coding part. What we are left with, केवल हमें ये देखना था कि अब कि मेरे जो डिफरेंट यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स मुझे निकालने थे, ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ। सो एवरेज लेंथ अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। एवरेज लेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज लेंथ इज इक्वल टू समेशन आई टेंडिंग फ्रॉम 1 to n mi इंटू पी आई, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू, ये देखिए M1 मैसेज जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03, और इसको कोड करने के लिए कितने बिट्स लग रहे हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस दूसरा मैसेज है M2 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25, और उसको कोड करने के लिए भी हमें 2 बिट्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो 0.25, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 प्लस 0.15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड मैसेज, और उसको कोड करने के लिए आपको 3 बिट्स की जरूरत पड़ रही है। सो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 प्लस 0.12 के लिए 3 बिट रिक्वायर्ड है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.12 प्लस 0.10 के लिए फिर से आपको 3 बिट की जरूरत पड़ी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 प्लस 0.08 के लिए फिर से 3 बिट, सो वी हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.08. So this will be the answer for your average code word length, and the unit for this will be bits per message, which is very important. The unit will be bits per message. So you can find out your answer and write over here. Next term was entropy. Entropy can be found out by using the formula summation I tending from 1 to n pi, probability of ith message, into log base to 1 upon pi, और you can also write it as माइनस का साइन बाहर ले लेते हैं, I tending from 1 to n pi into log base to pi, ठीक है। हमने क्या किया, log मेरा जो डिवीजन में था उसको हम ऊपर ले आए और माइनस का साइन बाहर ले लिया। दिस इज ऑल्सो वैलिड, सो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करेंगे, राइट डाउन एंट्रोपी ऑफ x विल बी इक्वल टू, माई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वॉज 0.3, so this will be like this. Second probability was 0.25, so this will be like this. And students, please remember here the formula which we are using has log base 2, so never calculate by using your calculator. आपके कैलकुलेटर में by default जो वैल्यू आती है वो log base 10 की आती है, so you have to remember here that this is log base 2. Okay, so next probability was 0.15, so we'll be having minus 0.15 log base 2 0.15 minus 0.12 log base 2 0.12 minus 0.10 into log base 2 0.10 and minus 0.08 log base 2 0.08. So this will be the formula for entropy, and the unit for entropy will again be bits per message. Okay, so this is the
way in which sometimes the the question has been asked for Huffman coding. So you have learned what is source coding, what is the need for source coding, how Huffman coding is applied whenever a numerical is given to us, and how we can find out the average code word length and entropy. So that's all for today's lecture, and this is one of the very important topic. You can go through it for your final exams. Thank you, students.